तो जैन के साथ जैन की प्रेजेंटेशंस आई डिड विद इमरान मसूद. अगर इमरान मसूद को कोई नहीं जानता तो ही इज़ माई मेंटोर और ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग सर्जन्स इन द यूके इंटरनेशनली भी. तो वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, तकरीबन 2 hours डिस्कशन ऑन वीडियोज़ ऑफ जैन. तो उसमें वी प्रपोज मैनी चेंजेस जिसकी वजह से जैन इज़ नाउ इंट्रोड्यूसिंग दोज चेंजेस. तो सबसे बड़ी चेंज जो है ये कि इसका कैलिबर 1 millimeter इज टू बिग. ही नीड्स टू रिड्यूस द कैलिबर. इनका पहले इससे भी बड़ा था शायद कैलिबर. इन्होंने ही लिसन्ड एंड ही हैज रिड्यूस्ड द कैलिबर टू 1, बट ही नीड्स टू रिड्यूस इट टू अराउंड 150 माइक्रॉन्स. तो और दूसरा कि सिलिकॉन इसके जान छुड़ानी है. So we don't want silicon tube. We want something which is more inner, like SIBS, SIBS, जिससे cardiac stents बनते हैं, जिससे pressure flow बनता है. And number 3, कि if it's 1 millimeter, when you put it through the angle, a 1 millimeter tube is going to cause continuous sloughing of endothelium. So ये endothelium in 10-15 years में ये खत्म हो जाएंगे. तो that's why you need something which can go through trabecular meshwork. Bismillahirrahmanirrahim. So on behalf of Pakistan Glaucoma Association and Ophthalmic Society of Pakistan, I welcome you to this instructional course on gonioscopy. I would like to welcome our chair, Professor Bodla, to kindly join us on the stage, please, and co-chair, Professor Imtiaz. Thank you very much, sir. So yesterday, Yusuf ने बड़ी अच्छी stats बताई कि only 2% of us do gonioscopy. तो आज वी आर ट्राइंग टू टीच यू गोनियोस्कोपी एंड आप लोगों को हम इनकरेज करेंगे कि इस स्किल को सीखें और ज़रूर परफॉर्म करें. एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू फर्स्ट इनवाइट प्रोफेसर इम्तियाज़ टू गिव सम बेसिक्स ऑन गोनियोस्कोपी एंड देन लेटर ऑन वील डायरेक्टली शो यू द एंगल एज वेल एंड हाउ टू डू इट. थैंक यू वेरी मच आशा. नहीं तो अभी आगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Thank you very much, Aisha. In 2008, I had a chance to visit Berlin for the European Glaucoma Congress, and there I attended a course by Tariq Shirawi and Zidane on gonioscopy for 3 hours. And before that, I thought this was an old procedure done by old eye surgeons, and it had not a very big value. And since then, I started to go through it, learn it, practice it as far as I could do. And then I thought that I need to impart this, whatever I know, to my juniors. And then coming into glaucoma, it became a very necessary to do. But still, it's very difficult to convince people to do it. But once you start doing it, it will not take many minutes, and it could be quite quick and very useful to you and the patient as well. So I think I've been giving this presentation for last at least 12 years, and I make some changes every year. So let's see that what I can tell you today, because today we are going to give you a practical demonstration as well. Dr. Rashid Zia is here, so we have designed that we may be able to give you some practical tips. This is my introduction. I am the first president of Pakistan Glaucoma Association, the founder president. This picture we have seen in every book, basic book, final year or postgraduate ophthalmology. This is the optics of the gonioscope. This is an indirect method
when you're examining the 6 o'clock, you're looking through the 12 o'clock mirror. And this presentation is about purpose of gonioscopy, principles, method, angle, structure, and grading, and the key points at the end. Why do you want to do gonioscopy? Somebody would ask you, in a person, normal person, or anybody with an ocular pathology. We need to it is a fundamental part of comprehensive eye examination if you are doing it. And most important factor in correct diagnosis, and omission could lead to misdiagnosis. It is done initially for all glaucoma patients and suspects, definitely, and repeated periodically. Previously I used to think once you've done gonioscopy, it is enough for rest of the patient's life, for 5 years, 10 years, maybe. No. It needs to be repeated at least 1 a year. It can differentiate between angle closure, occludable, and secondary glaucomas. I deliberately put this slide because, as Dr. Masood said, that 90% doctors do not do it. This was a slide from a very reputed department, and they thought that 45% of the patients don't do gonioscopy. But actually, as Dr. Masood said, that 98% don't do it. Visual acuity is done by 98%, intraocular pressure by 96%. Slit lamp, of course, you can't do without in 92%. Perimetry is 66%. So, what is the role of gonioscopy in ophthalmology and ophthalmological examination? Indentation gonioscopy can be used to break an attack of acute angle closure glaucoma. Not many occasions that you have to do that. Laser treatment has to be done through this, and surgical treatment these days, all stents and all things can be done through this. You can see the tumors of the anterior segment. You can see saccular dialysis cleft, ciliary body cysts, intraocular foreign bodies, which nobody knows about, that they were there many years ago, the patient had it. Early detection of KF rings. You see, you can see only KF rings. Sometimes you can miss them while you just do the examination on the slit lamp under magnification. But if you're not sure, if there's a plus minus case, you can do the gonioscopy and get more information. And unusual cases of glaucoma, that can mean anything. And it can differentiate between an open angle glaucoma and angle closure glaucoma, and to diagnose congenital glaucoma, secondary glaucomas, particularly with peripheral anterior synecdoche, angle recession. Patient had an injury many years ago, he doesn't remember it, and the intraocular pressure is going up. And if you do the gonioscopy, to your surprise, you may see angle recession. Uveitic glaucoma, very common to give rise to these synecdoche. And neovascularization, because you can have new vessels before they appear on the margin of the iris. You can have them in the angle, and you can detect them very early. And nowadays, neovascular glaucoma is quite treatable in early stages. And iridocorneal syndrome. Now, there are other purposes of gonioscopy as well. You can't do without it. If you want to do ALT, you should know where the trabecular meshwork is. You want to do laser iridoplasty in an acute angle closure, you should know how to do it. Laser cyclophotocoagulation, peripheral iridotomy and its follow-up, trabeculectomy, indentation gonioscopy can be used to break the synecdoche, as I said. And then there are therapeutic gonioscopy. We have done that now, goniopuncture, laser sclerostomy. You need to do a gonioscopy with a direct Coipi lens under anesthesia. For doing goniotomy, you need to know the structures in the angle. And then miniature implants without reservoirs, subconjunctival implants, then implants, suprachoroidal implants, CPAS. So how do we do it? That is the most important question. And how do we learn it? Direct gonioscopy, indirect gonioscopy, without indentation and with indentation. Today, when we do live gonioscopy, Dr. Rashid will show you that how do we do the indentation gonioscopy and what information we can get in this.
Now, I'm sure your question as a beginner will be, what kind of lens do we use? I think when I started, I used to start it with a 3-mirror lens. It has got a small gonio lens and you can rotate it. It's easier because you do it for retina purposes, you know how to do it. So you can do it. You can get a single gonio mirror in which there's only one mirror. But nowadays there are plenty of lenses that I'll show you that are used only for the purpose of gonioscopy. You don't need to see the retina. You need to do if you want to do a direct gonioscopy, a goniotomy on a child, you need to do you use a Coepi lens. You have to put it under the microscope and put the patient in a special position. The easiest thing for you to use as a beginner would be to use a Goldman 3-mirror lens, a slit lamp technique, which is very easy. You can pointer. You should align the outer canthus of the patient with the white or black mark on the slit lamp and start it with a 3-mirror lens. First, do the external examination. Tonometry must be done before gonioscopy, because if you do gonioscopy first, the intraocular pressure will change. Use local anesthesia. Pay attention to patient's comfort. Ask the patient, because the patient is going to be there on the slit lamp for 4 to 5, maybe 2 minutes or 3 minutes, whatever your expertise is. Magnification is 10 to 25x, right? You use a semi-dark room, not a totally dark room. Pupillary constriction makes a narrow angle appear more open. So, systematic approach is start at 6 o'clock position. So, you'll see in the opposite mirror, pupillary margin, see the first pupillary margin for new vessels or ectropion. Iris contour is regular, concave, steep, flat. So you don't go to the angle straight away. You see the other structures as well. Ciliary body band. Is it visible? Invisible? That will make the decision there and then. Scleral spur. That must be identified. And then is it visible or invisible or prominent? And then of course you come to the laser, trabecular meshwork, where you are going to fire laser for ALT or maybe SLT, whatever you are doing. So see, this first structure for the beginner is pupil, then iris, no problems there, then ciliary band, that must be identified. Then scleral spur, see the color of them is different. Then your main target, trabecular meshwork, that is pigmented. Scleral spur is not as pigmented, ciliary band is pigmented. And then Schwabe's line. Because these landmarks are going to help you as soon as you get the first view, it is going to tell you, is it a closed angle or is it a wide angle or in between. You can use, we'll come to this mirror. Normally you can use a single lens which has got a single mirror, right? And this is a Goldman 3-mirror lens you can use, or this is the Vogue 4-mirror lens that you can use. We'll show you. Now, when you use a technique or Zeiss lens, the peripheral precorneal tear film is used as a coupling solution. You don't need to put methyl cellulose as a coupling agent. Or if you want to use it, you get a better view. Or 1 drop of tear substitute applied in the square or diamond configuration. We'll show you when we do put the lens on the eye. A narrow slit beam of light is used for undistorted angle configuration. The Zeiss lens should touch the corneal surface and must not indent the cornea. Examination of the angle recess is facilitated by having the patient look in the direction of the viewing mirror. This is a very important and very practical point. If you can't see the angle properly, ask the patient to look in the direction of the mirror, it will open up. Now this is the mirror that we will show you. It has got a handle. You can use one without handle. You can see the magnification there, 10 magnification on your slit lamp, and just this is our optometrist in the department, and you can apply it there.
And in one go you can have, you can see all the 4 angles there. You should have an elbow rest there, so you are comfortable doing it. This is another patient. The patient just looks up. Explain to the patient what you are going to do. The handle should be lower and it should be applied in the shape of diamond or a square there. This is a 3 mirror which all of you have in your clinics. There you need a coupling fluid. And this is what you are going to see. These iris processes that you can see, you don't see in a normal person. And keep rotating the lens. So you are able to see all 360 degrees around. There, you see the mirror is being rotated there. There. Right. Advantages of indirect gonioscopy preferred by most: quick, no special equipment needed except slit lamp, can create corneal wedge, allows differentiation of oppositional and cynical angle closure. Disadvantage: mirror image can be very confusing. Sometimes you have to ask the patient to look. Inadvertent pressure on the cornea exaggerates the degree of angle narrowing in Goldman lens and opens the angle in 4-mirror lens. 4-mirror is used for indentation gonioscopy. Right. So when the iris covers the trabecular meshwork, it is very easy to mistake it for the non-pigmented trabecular meshwork scleral spur and a pigmented Chauvet's line for the trabecular meshwork. You see, these points you will only know when you have done enough cases. These are the pictures of different normal angles there, and then you will see the light. You can see there, you can try to identify the structure starting from the iris there up to the cornea. There is Chauvet's line for repetition again. There is the trabecular meshwork, pigmented, then scleral spur is slightly whitish, and then the ciliary body is there close to the iris. This picture will give you now diagrammatic. You can see that is the iris, that is the ciliary body face, that is the scleral spur which is grayish. That is your target when you want to do whatever procedure you want to do. Pigmented trabecular meshwork. And that is a non-pigmented trabecular meshwork. And then the Chauvet's line which is whitish or grayish. And then the corneal wedge is there. Now this is a live view of an angle. You can start from the iris and go up to the cornea, start recognizing the structures. You need some time and some practice to do it. Starting from the iris, ciliary body, scleral spur, and then trabecular meshwork. And now this is our normal Asian angle, which is more pigmented. And remember that 6 o'clock is more pigmented. Iris, ciliary body face, scleral spur, trabecular meshwork. Sempolisis line, you only see it in PXF, pseudo-exfoliation, and then, now keep rotating the lens, I said. Keep rotating the lens in all corners, and you see this? Keep rotating the lens. Normal pigmented angle. This is a magnification of the same. Magnified view. And this is a diagrammatic view again to emphasize. I'm telling you about the Schaeffer's classification. Dr. Rashid Zia will elaborate on the Spaeth classification. So this is straightforward. It is totally open, grade 4, 40 degrees. It is then grade 3 is 30, 20, 10, and then 0 is closed. And these are with practice you can remember that if you see the ciliary body, then 40, scleral spur only visible 30,
anterior trabecular mesh for 20, and if your only Schwabe's line is visible, it is 10 degrees. This is diagrammatic again, that grade 0 is a grade 1, G1, G2, G3, and G4 is 45 degrees, 20 degrees, 10 degrees, and closed. Now, when you become more expert, then you can see that this is an open angle, this is peripheral anterior synecdoche, they can be confused with iris processes, and then this angle is totally closed, you can't see any structure there. But anybody can tell this is neovascularization, a foreign body there, microhyphema after trauma or after surgery, and a big iris melanoma. I put this slide just for interest. This is a dynamic gonioscopy without touching you, just like a slit lamp. You see, this is Professor Nadeem of his butt. We did it in one of the conferences. And this is my own gonioscopy without any touch. This instrument is available by NIDEC, I think. So you can get a lot of information. It gives you hundreds of clips of this, and you can make a decision. You don't want to touch the eye, or you don't want to learn gonioscopy. So this instrument is also available, gives you a lot of information. So key points of my presentation, that is a fundamental part of ophthalmic evaluation: confirmation of normal angle structures, determination of narrowness of closure of AC angle, grading of angle, pathological findings, and needs to be performed routinely, maybe every year in a patient. Now, I put this slide just to highlight that perceptions of training in gonioscopy. There was a study, I don't have the reference, but this is the conclusion, highlighted ophthalmology trainees' dissatisfaction in the current gonioscopy training curriculum and a lack of confidence in performing the procedure. Appropriate modifications to the ophthalmology specialty training program could enhance their training. You see how there's so many examiners sitting here of FCPS. I'm sure none of them has asked anybody to do a gonioscopy in the FCPS Part 2, and it has never been part of the training courses in the FCPS Part 2. Thank you very much. Thank you very much, Professor Imtiaz. Our next speaker is Dr. Rashid Zia. He is a consultant in complex glaucoma from East Kent Hospitals NHS Trust. He is going to talk about SPAIT classification and ICT. Assalamu alaikum. Thank you very much for attending. तो जब तक ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आई विल से कि इम्तियाज साहब ने कुछ बहुत सारी बातें बहुत जल्दी से समुंदर में कूजे में समुंदर समो दिया, लेकिन अगर मुझे पैनलिस्ट इजाज़त दें थोड़ी सी सख्त बात करने को, जो मुझे पसंद नहीं करते मुझे तारिक अजीज़ साहब देख रहे हैं कि तुम बहुत सख्त बातें करते हो. अगर जो शख्स एनी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट especially if he's treating glaucoma and he has not done gonioscopy, उसके पास कोई right नहीं है कि वो उससे आगे examination proceed करे, diagnosis दे. The reason being कि जो आप ocular hypertension के मरीज देख रहे हैं, जब आप उनको gonioscopy करें, you will change your diagnosis to narrow angle in a vast majority of patients. नंबर एक बात. और इसलिए gonioscopy should be your essential tool. अगर आप नहीं करते तो आप बेशक ऑफ्थल्मोलॉजी प्रैक्टिस मत कीजिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. This is that essential and that important. तो सॉरी अगर किसी का दिल दुखाया, लेकिन this is important. तो मेरे से आपका सर नहीं. तो so education is not learning of facts, but training of the mind to think. अब आपने gonioscopy कर तो ली. It was a very comprehensive lecture. He took time to tell you the structures that you need to see. अब आपने वो कर लिया. अब उसका करना क्या है? This is what we will think today. ठीक है? This training is the training of the mind to think. So I'm just going to get rid of that. यार आपने गलत प्रेजेंटेशन लगा दी है.
इस टाइम पे यही थी सर। क्या नाम है इसका? मैंने सही भी कराई वहाँ पे, ITC पर जाएं ज़रा। किसी के पास USB स्टिक है? वो जिस फोल्डर में थी वो गलत कर दी। दो प्रेजेंटेशन थी इनकी, तो दोनों डाली होंगी ना आपने? इसको बंद दोनों कर डाली हैं पर वो दूसरे इसको फोल्डर में एग्जिट कर लें। सिस्टम नहीं, यहाँ से क्लोज करें, यहाँ से। वो स्टक हो गया। एस्केप। तो इसको शट डाउन करें ना। रिस्टार्ट कर बस हो गया। इस टाइम पे नहीं मिल गई थी। एक ये भी मेरे ख्याल में इनकी पड़ी हाँ, है। खोलो ऊपर खोलो, करो। दिखाओ। नहीं, एग्जेंट्रेशन है। नहीं, इसको बंद कर दें। इसमें नहीं जो कर वाली रहे वीडियो- हैं। ये इसमें तो नहीं काफी होगी। ऑर्गेनाइजर नहीं, ये दूसरा है। ये लगाओ जी, इसके बाद होना। इसके बाद नहीं, उधर को इधर नहीं ना। इसमें से ये वाली अब हो जाएगी। बस वो USB में है लिखना काफी। ये जी। I apologize for this disturbance. So, can I have a show of hands? How many people here who have never done gonioscopy? And how many of you are confident that they can do gonioscopy reliably and understand the findings? Okay. So what I would say is that I do gonioscopy a lot and been doing for many years. I am fairly confident, but every now and then, almost on a daily basis, I will see an angle that I cannot understand. So gonioscopy is not a simple, it's an essential basic part, but it's not simple. Majority of patients को आप समझ जाएंगे, लेकिन there will be one or two patients almost on a daily basis where you will struggle to understand कि क्या angle है. So I will just quickly go by. Okay, जो narrow angle है, is not that uncommon. So in 2012, the world prevalence was expected to rise to 21 million in 2020. However, when they did the review in 2021, they found it to be around 17.6 million. So this is a very big number. So what Pakistan में क्या है, we do not have the exact figure. However, Andhra Pradesh eye disease study said that every the rate is 16.4 per 100 person years. So that means that if you follow 100 patients for a year, you will find 16.4. So that means the workload of glaucoma in Pakistan is around 15 to 20%. Depending, because हमारी ethnicity पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा so in provincial basis में भी बहुत ज़्यादा ethnic diversity है, so we really do not know what is the exact, but it's likely कि 10 patients अपने glaucoma के देखें तो उसमें से 1 से 2 patient आपके narrow angles के होंगे, and if you don't do gonioscopy you're going to miss 20% of your diagnosis glaucoma patient. 20% misdiagnosis of glaucoma is a huge negligence, I believe. So the view is not, ना मैं इधर पढ़ सकता हूँ ना वो पढ़ सकते हैं. But anyway, what it meant to say that when I did a Caucasian study of my own area, which is like 99% white,
even there, my workload turned out to be 30%. And if Pakistani population has higher narrow angle incidence, then I expect that your workload of narrow angle should be more than 30%, or at least very similar. Just want to, the glaucoma clinic, we see the gonioscopy, at least 70% of the patient, I cannot see the pigmented part of it. Exactly. So, Majority. Open angle is not very common. yeah. But when you talk about the Southeast Asia, I think it's part of it. Exactly. So you can. So what Maher Saab mentioned, agar backbenches pe agar koi nahi sun saka, so he's saying that 70% in Aga Khan of glaucoma patients are narrow angle. So then you can imagine, if you don't use a gonio lens, how much misdiagnosis has been going on. So I would not go into this detail. इसमें सिर्फ इस चीज़ के पर एक चीज़ पे गौर करना है कि भाई अगर वैन हैरिक्स में अगर कॉर्नियल थिकनेस एंड इंटीरियर चेंबर का 1/4 का डिफरेंस है, 1/4 रिलेशनशिप है, तो दैट इज यूर अप्रोचिंग ग्रेड 2. लेकिन वैन हैरिक्स इज द थिंग दैट I have not done in last 20 years. क्यों? उसका मकसद क्या है? ठीक है, अगर Van Herrick is narrow, it gives me 99% sensitivity. I'm confident कि 99% chances में the angle will be narrow. Although I do not believe this 99 figure, I think it's overestimated, it's low. Even sensitivity is not that high, because कई दफ़ा जब बिल्कुल लगा होता है iris and cornea together, you to put gonioscopic lens on and you will find open angle. So 99% is not right, but still it should be somewhere in 90s. लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला है कि टेस्ट की स्पेसिफिसिटी ऑफ वैन हैरिक, एंड अभी यहाँ पे मेरे कॉलीग ने कह रहे थे कोई और टेक्निक थी, पता नहीं कोई और, तो वो भी स्लिट लैम्प बेस्ड थी वैन हैरिक की तरह की. ऑल दीज टेक्निक्स दे हैव वेरी लो सेंसिटिविटी. इसका ये मतलब है कि भाई आप अगर नहीं करते तो आपकी मिस डायग्नोसिस का चांस 30% इंक्रीज हो जाता है. 65% chances to identify true negative, or in layman words कि आपने 30-35% narrow angle miss कर दिया. तो ये तो हमें सब पता लग गया. अगर Van Herrick quarter है तो you're dealing with the tiger, you're dealing with the beast. So हर कोई टेंशन में होता है कि भाई इसको एंगल क्लोजर अटैक ना हो जाए. मसला ये है कि जब Van Herrick पे ओपन है, you miss the beast. If you do not do gonioscopy at this place, you can miss the narrow angles. So that's why it's very important that you do the gonioscopy. So I'm not going to present more on this. इम्तियाज़ साहब ने इस पर डिस्कस कर दिया. लेकिन what I want to say is कि जब कभी मैं कहीं हॉस्पिटल्स में यहाँ पे जाता हूँ तो उनके जो gonioscopy वो कांटे लगा के ऊपर 1, 2, 3, 4 लिखा होता है, वो सब ने गलत लिखा होता है. वो जो जिसकी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होती है वो उसको रोमन में लिख लेता है. रोमन and Arabic numericals are different. One in Roman is 4 of Arab. So इसलिए इंतहाई confusion होती है कि किसी ने वो open लिखा हुआ है कि close लिखा हुआ है. अगर आप यहाँ ये देख लें तो is entirely opposite. Skees grading and Sheffer's grading entirely opposite है. So इसलिए जब आपने कांटे लगा के ऊपर लिखा है तो please mention कि you are using Sheffer's grading and then only use Arab numericals. Do not use Skees, क्योंकि मैं देखूंगा मैं कहूँगा जी ये तो narrow angle आ गया. तो this is another example. This is Skees में, अगर Skees grading में this is an open, आप ये देख रहे हैं iris जो है ciliary body के अंदर inserted है. This is 4. Sheffer's में 4 है, स्कीज में वाइड ओपन है, ये स्कीज में 2 है, शेफर्स में भी 2 है, और ये स्कीज में 4 है और शेफर्स में 1 है. सो इसलिए प्लीज़ मेंशन कि आप किस किस्म की गोनियोस्कोपी ग्रेडिंग कर रहे हैं. Now that all back. Now I will come to space grading, which is the reason for this presentation, and इसके बाद we will also do on the slit lamp is how to deal with it. So space grading के 3 हिस्से होते हैं. जो कि अगर आप नाइस गाइडेंस पढ़ें, आप वर्ल्ड ग्लूकोमा गाइडेंस पढ़ें, आप पीजीए की गाइडेंस पढ़ें, आप किसी भी ग्लूकोमा सोसाइटी की गाइडेंस पढ़ें, वो कहेंगे जब, इम्तियाज़ साहब ने भी कहा है, जब आपने गोनियोस्कोपी करनी है, आपने 3 चीज़ें लाजमी बतानी है हर क्वाड्रेंट में. आपने ये बताना है कि एंगल किधर, आयरिस किधर इंसर्टेड है. आपने ये बताना है कि भाई उसका एंगल कितना है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और आपने ये बताना है कि उसकी शेप आयरिस की कितनी है. इन स्पेस ग्रेडिंग जब आपने पहली चीज़ बतानी है कि iris will always be inserted in ciliary body.
वो अगर अनलेस कोई एम्ब्रियोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, आयरस ने सिलरी बॉडी से ही निकलना है, वो कॉर्निया से नहीं निकल सकता, ठीक है। लेकिन ड्यू टू पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी, ड्यू टू न्यूरोवास्कुलराइजेशन, जब एडिशंस हो जाती हैं तो देन इट लुक्स कि आयरस हैज गॉन इनटू हायर स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअल एम्ब्रियोलॉजिकली इट्स ड्राइव फ्रॉम द सेम टिश्यू एज द कोरॉइड। सो जब कैपिटल लेटर्स आप में लिखेंगे A, B, C and D, इसका मतलब है वो आपको A, B, C, D बताएंगे कि किस जगह इंसर्टेड है, एंड वी विल कम टू दैट पॉइंट। जब आपने नंबर लिखा है 20, 30, 40, इसका ये मतलब होगा कि उसका पेरिफेरल आयरिस का कॉर्निया के साथ क्या रिलेशनशिप है, कितना है, 40, 20, 30 कितना है। और फिर शेप जो है उसको स्मॉल लेटर्स के साथ लिखने हैं। जो इंसर्शन है कैपिटल लेटर्स के साथ, और स्मॉल कैप्स जो हैं वो शेप बताएंगे। तो वी विल कम टू दैट इन अ मिनट। तो ये इम्तियाज साहब ने बड़ी अच्छी तरह कवर कर लेते हैं इंसर्शन। अब कैपिटल लेटर A, कैपिटल लेटर B, कैपिटल लेटर C, D and E इज वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। A मीन्स एंटीरियर टू शोल्डर्स लाइन। अगर आपका आयरिस जो है शोल्डर्स लाइन के ये जो एरिया, दिस एरिया, इसको हम ट्रेबिकुलर मेशवर्क कहिए। इसका पोस्टीरियर हिस्सा पिगमेंटेड है, इंटीरियर नॉन पिगमेंटेड है, जैसे फिजियोलॉजी है। इसके आगे शोल्डर्स लाइन। अगर आपका आयरिस ऊपर जाके लगा है, एंटीरियर टू शोल्डर्स लाइन इज A। अगर आपका आयरिस इज इंसर्टेड on the trabecular meshwork, which means between the ये scleral spur है इसके पीछे, between the scleral spur and the shoulders line, or in other words, if it's attached into the trabecular meshwork, then it's called B. C जो है ये scleral spur से लिया गया SC, and D means if it's inserted, D और E जो हैं दोनों ciliary body के अंदर लगे हुए हैं, जो कि normal है। D means it's inserted deep, E means extremely deep. This is a racial variation, and I think मैंने पाकिस्तानी आई ज़्यादा नहीं देखी, तो I don't know कि what kind of normal open angles we have. But Caucasians जो हैं they are more into E, Africans they are more into D. तो वो आप उनका starting point ही different होता है Africans का। तो ये लिखा है कि real insertion capital letters D and apparent insertion capital letter जो है स्मॉल में आपने, हाँ, सो व्हाट इट्स ट्राइंग टू से कि आपने अगर कैपिटल लेटर में डी लिखा है, दैट मीन्स कि आयरिस इज इंसर्टेड इनटू सिलरी बॉडी, लेकिन उसके बाद आप ब्रैकेट्स डालें, ब्रैकेट्स डाल के फिर कैपिटल लेटर्स में ABC आप लिख सकते हैं। उसका मतलब ये है कि जब प्राइमरी पोजीशन में आपने गोनियोस्कोपी की है, उधर आपको आयरिस किधर इंसर्ट नजर आ रहा है। प्राइमरी पोजीशन में अगर सिर्फ ट्रेबिकुलर मेशवर्क में इंसर्टेड नजर आ रहा है तो आप ब्रैकेट्स के अंदर B लिख दें, लेकिन जब आप इंडेंट करें तो आपको सिलरी बॉडी नजर आएगी, आप D साथ लिख दें। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी बाद में। तो सिंपल इसी तरह ये तो आपको खुद ही अंदाजा करना पड़ेगा। यू कैन टेक क्लूज फ्रॉम शेफर्स ग्रेडिंग 10, 20, 30 क्या होता है, लेकिन द वे आई लर्न वो कि प्रोटेक्टर लिया था, और प्रोटेक्टर लेके आई यूज टू मूव प्रोटेक्टर लाइक दिस एंड गेस के ये 40 कितना, 20 कितना, 30 कितना। तो विद इन 2-3 डेज मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये 40 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तो यू कैन प्रैक्टिस मैनी वेज, लेकिन बात यह कि जो भी ये करेगा, दोज हु अंडरस्टैंड एंगल्स और दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड एंगल्स, फिर भी उनके दरमियान में एग्रीमेंट काफ़ी अच्छा है। सिर्फ 5 डिग्रीज 10 डिग्रीज तक का डिफरेंस आता है, लेकिन एग्रीमेंट फिर भी अच्छा, चाहे आपकी मैथ्स अच्छी है या नहीं। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल। अब आपने स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं। स्मॉल लेटर्स में अगर इफ इज बोइंग फॉरवर्ड, bow forward, anteriorly convex, bow forward, small letter B. Agar ye, if it rises straight up and then flattens, that's a plateau. Plateau. Usko aap chota p likhenge. If it's just flat iris, chota f. And if it's concave backwards, jo ki jaise pigment dispersion syndrome mein hota hai, is C. So अभी हमने गोनियोस्कोपी की सही कही भी नहीं, लेकिन I can, if you see a high myope with posteriorly convex iris, you can without even looking at the things, you can say that this person may be susceptible to pigment dispersion. This is a practice for all of you. You can see the iris is inserted into the ciliary body. It's not very deeply inserted. It's inserted somewhere in the middle and interior. So it's D. लेकिन जब गोनियोस्कोपी, ये देखें आयरिस इतना ज़्यादा कॉन्वेक्स है कि प्राइमरी गोनियोस्कोपी में यू वुड बी स्ट्रगलिंग टू सी सिलरी बॉडी, यू मे जस्ट बी सीइंग ओनली द ट्रेबिकुलर मेशवर्क। सो इसलिए ब्रैकेट्स में कैपिटल लेटर B, एंड देन
the angle to me looks like 25, but the shape of the iris is plateau. Plateau iris diagnose करना कोई मुश्किल काम नहीं है. If the shape is like a plateau, it rises up and then straightens, it's plateau. It's that simple. और trabecular meshwork में कोई pigmentation नहीं है, तो you write 0, posterior trabecular meshwork pigmentation. Another example, अब यहाँ पे iris is again inserted into ciliary body, and it's a flat, so D and F. And angle is quite big, 40 degree. Trabecular meshwork pigmentation जो यहाँ आपको नज़र आ रही है, you can guess it +1, +2, +3. तो मुझे +2 लगी, तो +3 भी लिख देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता. तो हर एंगल में जब ये लिखा होगा तो आई वुड नो कि भाई इस क्वाड्रेंट के अंदर इट्स अ फ्लैट इंसर्शन, इस क्वाड्रेंट के अंदर इस फ्लैट सिलरी बॉडी इज विजिबल, नॉट विजिबल, पिगमेंटेशन लेवल क्या है. सो विद जस्ट 3 letters यू हैव रिटन एवरीथिंग, यू गिवन डिटेल्स जो अदरवाइज आपको एक पैराग्राफ लगता है संभालने में. सो ऑन दिस वन अब आप ये देख रहे हैं कि ये आयरिस जो है तो सिलरी बॉडी में, लेकिन यहाँ पे साइनिकल क्लोजर से लग रहा है. ठीक है, अब आप गोनियोस्कोपी करेंगे तो आपको ट्रेबिकुलर मेशवर्क भी हार्डली नजर आए, तो आपको अपैरेंट इंसर्शन ऑफ आयरिस इज ए देन टू मी. ओके, इस जगह पे इसलिए मैं कहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज यूज इंडेंटेशन, जो कि आपको डिखाएंगे. इंडेंटेशन करेंगे तो ये आयरिस को आप पीछे पुश कर सकेंगे. अगर पुश नहीं होता तो इट्स लाइकली टू बी साइनिकल, अगर पुश हो जाता है तो इट्स एपोजिशनल. तो जब पुश किया तो ये खुल गया एंगल. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जिसकी मैं क्लासिफिकेशन करूंगा कि असल में तो एंगल डी ही है, असल में तो 4 ही है, लेकिन अपेरेंटली विदाउट इंडेंटेशन इट वाज ए एंड 20 डिग्री. इट लुक्स लाइक अ प्लेटो टू मी, and posterior trabecular meshwork pigmentation is +2. Similarly, this one, any trainee here, you can tell me spade grading. It's very simple. It's an E because it's very deep. It's 45 degree, 50 degree, आपकी मर्जी है. It's C, and you can see very heavy posterior trabecular meshwork pigmentation. So, अब ये सारी information तो आपके पास आ गई. Now, point is, I hope there's no foreigner here, otherwise I'm talking in Urdu a lot. The point is, after all that information, करना क्या हमने इसका? मुझे जब information ये मिल गई, I need to decide कि भाई ये angle functional है कि नहीं है. ठीक है, उसके लिए ओपन एंगल में भी बहुत सारे क्लूज होते हैं आपने देखने के लिए कि भी एंगल क्लोज्ड है कि नहीं, लेकिन आपने बेसिकली जब हमने एंगल क्लोजर की तरफ देखना है, हमने देखना कि भी एंगल ओक्लूडेबल है कि नहीं है. अगर आप सिर्फ लिख देती हैं अगर हम सिर्फ इस तरह लिख देते हैं 1-2 क्वाड्रेंट्स के अंदर, तो आई स्टिल डू नॉट हैव अ क्लियर कट आइडिया कि भाई एंगल ओक्लूडेबल है कि नहीं है. ओक्लूडेबल एंगल क्या होता है? सो फॉर ट्रेनीज डेफिनेशन ऑफ ओक्लूडेबल एंगल इज वेरिएबल. ओके, सबसे पहले ये कि जो मेजर ग्लूकोमा सोसाइटीज़ हैं वो डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करती हैं, डिफरेंट तरीके से डिफाइन करती हैं. देयर इज़ नो क्लियर थ्रेशोल्ड ऑफ ओक्लूडेबल एंगल. अगर आप एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ देखें या फिर आप रिसर्च स्टडीज़ देखें, मंगोलिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, चाइना, तो दे विल क्लासिफाई कि जब वन क्वाड्रेंट और क्वार्टर ऑफ एंगल इज क्लोज्ड तो वो आप ओक्लूडेबल है. लेकिन अगर आप किसी और की देखें, थॉमस जिसको कि हम सारे फॉलो करते हैं, वर्ल्ड ग्लूकोमा सोसाइटी, EGS, और करंट गाइडलाइंस भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, क्वार्टर इज टू स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया, कम से कम हाफ ऑफ एंगल और जो है वो ब्लॉक होना चाहिए. तो लेकिन अगर आप बेकर्स एंड शेफर, जिन्होंने सबसे पहले ओरिजिनली क्लासिफिकेशन दी थी शेफर्स की, दे सजेस्टेड अगर 20 डिग्री भी, यानी वो 1 क्वाड्रेंट की भी नहीं बात करे, वो 90 डिग्रीज की भी नहीं बात करे, वो हाफ ऑफ द क्वाड्रेंट की भी नहीं बात करे 45, वो उससे भी ज़्यादा 1/8 की बात कर रहे हैं कि अगर वो ही अगर ओक्लूडेड है ट्रेबेकुलर मेशवर्क, दैट कुड बी एन ओक्लूडेबल एंगल. नाउ क्वेश्चन ये पैदा होता है हर किसी के दिमाग में, इतने सारे लोग और इतनी सारी डेफिनेशंस क्यों? सो फ़र्क ये है, ये समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द गोल्डमैन्स इक्वेशन. आई होप कि ये मैं समझा सकूं कि यहाँ मैथ्स है और मेरी मैथ्स बहुत वीक है.
तो एक इक्वेशन है उसे कहते हैं गोल्डमैन इक्वेशन एंड व्हाट दैट सेज इज दैट परफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, यानी जो प्रेशर जिसके साथ एक्वस बाहर जाता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क के साथ से आगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना प्रेशर भी ज़्यादा चाहिए होगा। लेट्स से अगर आपने 16 प्रेशर मेंटेन करना है, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पीछे से प्रेशर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, वरना तो वो फ्लो नहीं करेगा। तो परफ्यूजन प्रेशर is equal to pressures minus episcleral venous pressure. जो प्रेशर प्रिवेंट कर रहा है एक्वस टू गो आउट, वो आपका episcleral venous pressure है, और जो प्रेशर पुश आउट कर रहा है वो आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर है। इन दोनों का डिफरेंस इज द ड्राई फोर्स विच इज परफ्यूजन प्रेशर कहते हैं, विच इज दिस रेड लाइन। ओके, तो हम दोबारा इसी इक्वेशन पे अब आते हैं। अब इंट्राऑकुलर प्रेशर का फिजियोलॉजिकल रेंज सबको पता है 16 है, एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर का सबको पता है फिजियोलॉजिकल रेंज 7 है। अगर इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो परफ्यूजन प्रेशर कम्स आउट टू बी 16। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं कि भाई जो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं, जो 16 है प्रेशर को मैं इक्वेशन के इस तरफ ले आया हूँ, सिंपल सी मैथ्स की है इसलिए भूल गया हूँ। सो इफ़ यू मूव दिस आईओपी ऑन दिस साइड ऑफ इक्वेशन, तो आपको ये होगा कि जी प्रेशर जो है इंट्राऑकुलर प्रेशर, दैट्स द परफ्यूजन प्रेशर प्लस एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर, यानी 16 इज इक्वल टू 7 + 9। अब परफ्यूजन प्रेशर और रेजिस्टेंस को मैं डबल कर देता हूँ, यानी कि अभी एंगल 360 डिग्री ओपन था, अब मैं उसको, तो रेजिस्टेंस 7 थी, अब मैं उसको हाफ उसका एंगल 180 डिग्री में एंगल बंद कर देता हूँ, या आपको 180 डिग्री एंगल रिसेशन हो गई है जहाँ से अब नहीं निकल रहा कुछ आगे। तो वो जब रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, आप 7 की जगह 14 लिख दें, 14 लिख दें, तो कितना प्रेशर हो जाएगा 23। मतलब व्हेन यू लूज अबाउट हाफ ऑफ द एंगल, तब भी आपका प्रेशर 23 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसका मतलब है जब बेकर एंड शेफर ने 20 डिग्री कहा था, दैट मीन्स उनका रेस्ट ऑफ द ओपन एंगल कॉम्प्रोमाइज था। ठीक है, उनके जो पेशेंट्स थे उस जमाने में, उनको पता ही नहीं था शुरू में, और अगर ओपन एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट्स थे, उनका ट्रेबेकुलर मेशवर्क वाज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड इफ दे हैव जस्ट 20 डिग्री एडिशन, दे विल गो इनटू 40-50। सिमिलरली अ पेशेंट हु हैज लेस कॉम्प्रोमाइज्ड ट्रेबेकुलर मेशवर्क, उसमें 90 डिग्री पे भी आपको ओक्लूडेबल एंगल हो सकता है, और जिनके बिल्कुल सही है उन पे 180 भी नहीं होगा। एंड हियर इन क्लिनिक्स I see more than 3 quadrants or sometimes 4 quadrants of ITC. ITC means iridotrabecular contact, yani grade 2, 4 quadrants, pressure 15, 16. This is again a different science, वो फिर कभी discuss करेंगे। तो yeah, this is now getting more, this is so 20 minutes हो गए? So I will stop here. I would not go into the plateau iris. Bharal, sometimes you don't see plateau iris के सारे में तुमको लोगों को confusion होती है. That's why I kept it here. So आप ये देखें कि इसमें posterior profile of the iris is straight, but the anterior profile it rises up and then, so it's not really a true iris. It's called Asian plateau. अब यहाँ पे ये देखें गोनियोस्कोपी है, आपको एंगल नजर नहीं आ रहा। अब आप इंडेंट करेंगे, इंडेंट किया और ये डिप्रेशन आ गया और यहाँ से एंगल ऊपर हुआ। ये जो सल्कस है, दिस इज ड्यू टू प्लेटो आइरिस, कि ये जो सिलरी प्रोसेसेस हैं, दे आर टेंटिंग अप द आइरिस। अगर जब आप इधर से प्रेशर डालेंगे तो ये चीज़ तो डिप्रेस नहीं ना होगी, ये चीज़ डिप्रेस हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे आपको एक सल्कस बन जाएगा, जिसकी वजह से डबल हम्प बनता है प्लेटो आइरिस का, like this, you see double hump. So that's why you call it plateau. So now let's go and do the practical demonstrations. So जिसने attend करना है, we have lots of people here. So what we will do is first Imtiaz Saab will do triple mirror, and then we can show the angles live here, and then I will do indentation and the tricks of doing indentation. It's been
10, 15 years, I haven't used triple mirror. I always use indentation because it takes me 10 seconds to do gonioscopy. और एक और सबसे बड़ी बात misconception जो कहते हैं जी कि हम 11 o'clock mirror है तो we are looking at 5 o'clock या 1 o'clock mirror है तो we are looking at 7 o'clock. ये FRC ऑफ्स का भी multiple choice question है, that is wrong. This is a wrong concept. You can't tell. आपका थोड़ा सा हाथ टिल्ट हो जाए, एंगल टिल्ट हो जाए, जो आपको 7 o'clock नज़र आ रहा है वो आपको 5 o'clock नज़र आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ये FRC ऑफ्ट का क्वेश्चन है कि दैट्स द रॉन्ग. मिरर तो ठीक है आपको उधर ही देगा, लेकिन खाली आपने एग्जैक्ट परफेक्टली लाइन तो नहीं ना आप रख सकते, ना आँख रह सकती है, ना पेशेंट रह सकते हैं, ना आपका हाथ रह सकता है. सो गोनियोस्कोपी जो है इज़ एन आर्ट. और अगर आपको ITC नज़र आ जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ खड़े कर लें, भागना शुरू कर दें, उसको कैटरेक्ट सर्जरी ऑफर कर दें. वी विल डिस्कस दिस ज़ैप एंड ईगल ट्रायल, जिन्होंने जिसे कहते हैं पंजाबी में अंत मचा दी है, हर कोई कैटरेक्ट सर्जरी पे आ गया. सो हाउ मच ऑफ ITC इज़ रियली इम्पोर्टेंट, what ZAP trial got wrong with the YAG PI, what EAGLE trial got wrong with the cataract surgery. We will discuss later in my last presentation, जो 5 o'clock है. But बात ये है कि when you see narrow angles, you should know how much narrowness is narrow. Pressure अगर 23 पे से ज़्यादा अगर 28, 29 पे है, that means almost 3 quadrants तो चले जाने चाहिए. लेकिन अगर आपका प्रेशर 3 क्वाड्रेंट्स ITC या फिर भी 15 है, इसका मतलब है कि आपका ट्रेबिकुलर मेशवर स्टिल काम कर रहा है, या फिर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर ट्रेबिकुलर मेशवर काम नहीं कर रहा तो आपका सुप्रासिलरी फ्यूजन, सुप्रासिलरी जो जिस तरह लेटेनोप्रोस्ट काम करता है, सिलरी पाथवे वो काम कर रहा है. सो दिस इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स thing. You need to spend time during your training and even after training to understand that what is ITC, how does the aqueous goes out. But for this instructional course, we need to concentrate on gonioscopic classifications and the use of ITC, जो कि आप अगले बंदे को information दे सकें, आगे उसकी मर्जी उसने क्या करना है. Thank you very much. One question, please. Excellent presentation. How would you compare this gonioscopy with the OCT scan? Yes, excellent question. It's an extremely so OCT, anterior segment OCT, या फिर posterior segment OCT with interior attachments हैं, they all work on, they're all SD OCTs. उन सब का जो अगर मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जो नाइस रॉयल कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी की गाइडलाइन है, they all say to use this tool as a screening. हाँ ठीक है. It's an excellent screening tool for onward referral. It's a tool for optoms. It's a tool for non-ophthalmologists. It's a tool for non-glaucoma people. If you're a glaucoma person, gonioscopy is essential. Thank you very much. So now, इस वक्त इम्तियाज़ साहब जो हैं प्रोफेसर आयशा शकील की गोनियोस्कोपी कर रहे हैं. ठीक है सर, लाइट्स डाउन कर दीजिए प्लीज. गोनियोस्कोपी इज़ अ डार्क रूम टेस्ट. और जब आप गोनियोस्कोपी करें, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई अपना वो फोकस करने के बाद ही इज़ गोइंग टू रिड्यूस द साइज, ही विल मूव अवे फ्रॉम द प्यूपल. देखा, he is moving away from the pupil because you don't want your pupil to constrict during gonioscopy. And he will also, abhi, for the sake of demonstration, he cannot reduce the light, otherwise nazar nahi aayega aap sabko. But he's going to go into the angle and reduce the illumination too in a dark room test, ताकि आपका pupil normal size के हो. अभी तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा. Absolutely. You can't quantify ITC. सर मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा.
इम्तियाज साहब अगर आप लाइट इंक्रीज कर दीजिए बैंड तो फिर शायद नजर आना शुरू हो जाए. I can see Imtiaz on the screen. So, वो जो सबसे बड़ा ट्रिक है गोनियोस्कोपी में, हाँ आ गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज यू आइडेंटिफाई द स्क्लेरल स्पर. देखें कुछ भी करने से पहले स्क्लेरल स्पर जो कि बहुत ज्यादा वाइटिश बैंड होता है, अगर ये आपने कर लिया तो एटलीस्ट ग्रेड 3 तो है, ठीक है. इसके बाद आप देखें नीचे सिलरी बॉडी भी नजर आ रही है, इस वाइट के ऊपर आपको ट्रेबिकुलर मेशवर्क. अब आयशा शकील साहब का जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क इज वेरी लिटिल पिगमेंटेशन, इवन दो शी इज एन एशियन, लेकिन पिगमेंटेशन इज वेरी लिटिल. और आप ये देखें आयरिस की प्रोफाइल इज फ्लैटिश. सो अगर मैं स्पेस ग्रेडिंग करनी हो, ये ग्रेड 4 है वैसे शेफर्स में, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई इनका आयरिस सीम्स टू बी इंसर्टेड डीप इनटू द सिलरी बॉडी, कैपिटल लेटर डी, फ्लैट एंड अबाउट 40 डिग्री के करीब तो इनकी होगी एंगल. सो डी 40 F एंड 0 PTM. यहाँ से मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क में पिगमेंटेशन या है ही नहीं या बहुत मिनिमल है. तो अगर इनका स्क्लेरल स्पर को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप TM को भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा. सबसे पहले आपने स्क्लेरल स्पर को आइडेंटिफाई करना है. वो जो बुक्स कहती हैं वो वेज कॉर्नियल वेज, मुझसे शर्त लगा लें कि आज तक किसी ने ना उसको देखा है ना वो कर सकता है. आई ट्राई टू डू इट फॉर 6 months, ओनली once or twice I got a corneal wedge. Yeah. Yeah. So if I tell them that you must look at the Chalmers line and then work your way down there. मेरे ख्याल में हर्ज तो कुछ नहीं है, लेकिन इट्स डिफिकल्ट क्योंकि सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइबल स्ट्रक्चर इज ये देखिए. राशिद, सॉरी टू इंटरप्ट, जरा नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बता दें क्योंकि आप हमारी कमिटमेंट देखें पीजीए की. हाँ सर, ये पीजीए की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सब्जेक्ट बनी है. आरएस, ठीक है, ये देखें इनका जो स्क्लेरल्स पर यहाँ अब ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है. हाँ ये देखें स्क्लेरल्स पर, ठीक है. सबसे पहले अपने वाइटिश मटेरियल स्क्लेरल्स पर का देखना, ठीक है. और ये चीज इसमें इंडेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है. मेनी टाइम्स यू विल सी अ वाइट बैंड, आप कहेंगे ये तो स्क्लेरल्स पर है, आप इंडेंटेशन करें तो आप उसके नीचे आपको दोबारा एंगल असल नजर आएगा. तो इसलिए इसको कहते हैं सूडो एंगल. तो इसलिए विदाउट इंडेंटेशन कोई गोनियोस्कोपी नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज एन एक्सीलेंट थिंग. जो थैंक यू वेरी मच इम्तियाज साहब, वेरी नाइस. डिड एवरीवन रियलाइज कि आयशा के शुक्रिया अदा करें. थैंक यू वेरी मच. और आपको पता है नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं हूँ. And one more important point I would like to request to Professor Imtiaz. Sometimes when you are doing the indentation, you can show the blood flowing in the canal of shell. Absolutely. Professor Imtiaz, can you do that? So now I will show you the 4 mirror. 4 mirror things for 4 mirror is that it's easier to do, it's quicker to do, and it gives you indentation, so it gives you far more information which you definitely require if your narrow angle population is more. अगर आप indentation नहीं करते narrow angles में, you can miss a lot of things. लेकिन इसमें यह है कि view आपका 4 mirror में would never be as clear as 3 mirror और single mirror, क्योंकि single mirror में आप coupling agent use कर रहे हैं, आपका कॉर्निया डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा. तो इसलिए व्यू बहुत अच्छा. जिन्होंने गोनियोस्कोपी शूट नहीं की, दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ट्रिपल मिरर, लेकिन जो करते हैं दे शुड मूव ऑन टू 4 मिरर और 6 मिरर और सिंगल मिरर इंडेंटेशन. वो अपनी मर्जी का इंडेंटेशन मिरर ले लें और उसमें. अब इंडेंटेशन मिरर जो दे कैन कम इन मेनी डिफरेंट टाइप्स. तो जो जाइस का दिखा रहा है जो 4 मिरर है, इट कम्स विद अ हैंडल. Handle can be screwed at 2 different angles depending on your shoulder and elbow angles. मुझे दोनों पसंद नहीं है तो मैं तो उसका बिल्कुल निकाल देता हूँ, हैंडल निकाल देता हूँ. I just use the lens itself. तो my preference is 6 mirror. 6 मिरर का फ़ायदा ये है कि मैं कंफ्यूज कम होता हूँ क्योंकि वो एक तरह से कंटिन्यूस मुझे एंगल नज़र आ रहा है. वरना एज सून एज यू स्टार्ट रोटेटिंग दी गोनियो लेंस, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि जो 1 o'clock इज़ नॉट नेसेसरी 7 o'clock, इट कैन 1 o'clock कैन बी 5 o'clock टू, डिपेंडिंग ऑन द इंसिडेंट एंगल ऑफ द लेंस. तो इसलिए थोड़ा सा भी हिल जाए, यू नेवर नो वेयर यू वर, यू गेट टोटली कंफ्यूज्ड. सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर राशिद. अब नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट प्रोफेसर इम्तियाज हैं. ही इज़ अ हाइपरमेट्रोप
एंड फेकिक हाइपरमेट्रोप तो हम उनका एंगल देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आप इंडेंटेशन कर रहे हैं या? जी, ये हम जाइस का 4 मिरर गोनियो लेंस यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जाइस का मिरर ना, इसके बड़े तेज एंगल्स होते हैं, तो कोशिश करें जो एंगल है जो डायमंड का वो लिड की तरफ ना हो, नहीं तो पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको ऐसे रख के। जी, ऑफ कोर्स गोनियोस्कोपी तो हो, और 4 मिरर को वो तो कहते हैं कपलिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डाल लेंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। कतरा ऊपर ऐसे रख दें, उसके ऊपर एक ही कतरा चाहिए होता है उसके लिए, तो आपका व्यू क्लियर हो जाएगा। 4 मिरर का ये है कि यू विल सी लॉट्स ऑफ एयर बबल कमिंग इन एंड आउट। If air bubbles are darting in and out, that means it's the right pressure. And when you start seeing corneal striate, that means you are already indenting. तो कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा इंडेंट करना पड़ता है, and you have to look through the striates, लेकिन to see the primary angle, only air should be darting in and out. अगर आपने viscoelastic agent यूज़ कर लिया फिर एयर नहीं आएगी, लेकिन there should be no striate. जी नहीं, yes, तो you cannot do it. हाँ, ये एक बेसिक रूल था, मैं बताना भूल गया कि जो ट्रिपल मिरर है उसके साथ आप इंडेंट नहीं कर सकते। महमूद साहब, आप लाइट ज्यादा कर लें तो शायद नजर आ जाए। उससे फॉल्स ओपनिंग ना हो जाए। नहीं, वो उसको पहले नजर तो आए ना, फिर ओपनिंग क्लोजिंग कर लेंगे। एंड द स्लिट, यू कैन कीप अ नैरो स्लिट फर्स्ट। जब आपको नजर आ गया एंगल, देन यू कैन एनलार्ज द स्लिट, बट एट ऑल टाइम्स यू शुड बी अवे फ्रॉम द प्यूपल इन अ डार्क रूम। ये देखें, ये सर मुझे खुद नहीं किसमें नजर आ रहा किधर पहुंच गया। Can you appreciate it, sir? Right now, I can see it. Just a magnum is indent. सर इंडेंट करें, मैग्निफिकेशन जब फोकस हो जाए देन इंक्रीज द मैग्निफिकेशन। यू फर्स्ट फोकस एट अ लो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आ जाए देन इंक्रीज मैग्निफिकेशन, अदरवाइज इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। नहीं सर, क्लियर नहीं हो रहा, या इनका एंगल क्लोज तो नहीं है सर? हाँ हाँ, सो इट्स नॉट अ वेरी क्लियर थिंग। आऊं सर? लाइट इंक्रीज कीजिएगा सर। लाइट थोड़ी सी इंक्रीज। ये लाइट इंक्रीज कर रहे हैं जस्ट फॉर फोटोग्राफी सेशन, नॉट फॉर द क्लिनिक। आपको स्लिट लैंप पे बहुत अच्छा नजर आ रहा होगा ऑलरेडी। ये देखिए, सो यू कैन ऑलरेडी सी दैट 4 मिरर की जो व्यू है इज नॉट एज गुड एज ट्रिपल मिरर, बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट टू अडॉप्ट दिस। So it is visible on the slit lamp. I don't know. Can you see it on the display right now? So can I try और आप एक्सप्लेन? ये फिर ब्लर हो गया सर। आपने ऐनक तो नहीं उतारी हुई अपनी? आप बेहतर हो गया। हाँ, Can you see it? यस, इसमें ये देखें ना, ये अभी भी कुछ साफ अगर नजर ना भी आए, आप क्लियरली स्क्लेरोस्पर को तो देख सकते हैं ना। आपने स्क्लेरोस्पर को देख लिया तो देन यू कैन फाइंड, देखें ब्लड Yeah. नजर आ रहा है क्योंकि ही इज इंडेंटिंग एंड ही कैन सी ब्लड। This is without indentation and now this is with indentation. नहीं सर, वो अच्छा आप ऐनक पहन के करें या फिर वो माइक्रोस्कोप ग्लासेस का नंबर कितना? Minus 0.5. चलिए दूसरा या फिर वो अपने रिफ्रैक्शन सही करें आईपीस में ना। 0.5 5 नहीं 0.5। वो IPT थोड़ा कम कर दिया। क्योंकि ही कैन सी क्लियरली, लेकिन जो डिस्प्ले होता है स्लिट लैंप पे, वो अगर आपका फोकस आपकी रिफ्रैक्शन को मैच नहीं कर रहा तो देन। हाँ, ये देखें ना, इनको आपने सबने देखा कि कुछ और नजर आए ना आए, स्क्लेरोस्पर तो नजर आ गया ना, तो स्ट्रेट अवे यू नो कि ये स्क्लेरोस्पर है, दैट्स ग्रेड 3। इसके नीचे आपको सिलरी बॉडी नजर आ रही है, दैट्स ग्रेड 4।
ठीक है, ये हाँ देखें, And now I have indented. अब बेहतर हो गया। और जब आप इंडेंट करेंगे ऊपर कॉर्निया पे ये देखेंगे कि स्ट्राइड्स आने शुरू होंगे, ये देखें हाउ मच ही कैन इंडेंट, ये देखें इंडेंट के बगैर, एंड नाउ इंडेंट करें सर, और ये इंडेंट करके कितनी सिलरी बॉडी, और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, लेट गो स्लोली। This is without indentation. फोकस and नहीं है ये। This is with indentation. ये देखें ना कितना बैंड आपको नीचे नजर आ रहा है, व्हेन ही लीव्स द आइरिस गोज ऑलमोस्ट टू द स्क्लेरल स्पर। सर सही नजर आ रहा है, सही बात की है। ये देखें यहाँ पे आपको कई दफा स्क्लेरल स्पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंडेंट करके आपको यू कैन सी द सिलरी बॉडी। तो This is without indentation and now you, ये इसका हाँ, this is with आप indentation. छोड़ें जरा, थोड़ा हल्का करें। Can you see the difference in angle getting wider and not? So he has an apparent insertion. मैं अगर मुझे सर ये इनका सिर्फ स्क्लेरल्स पर नजर आता ना हल्का हल्का without indentation. Yes. तो अगर मैंने इनकी स्पेस ग्रेडिंग करनी हो तो मैं कहूँगा जी इंडेंटेशन से तो सिलरी बॉडी नजर आई थी, दैट्स वाइज डी, लेकिन ब्रैकेट्स में मैं सी लिख दूंगा कि इंडेंटेशन के बगैर सिर्फ स्क्लेरल्स पर नजर आ रहा है, ठीक है। एंड देन जो पिगमेंटेशन इनकी ++1 +2 posterior trabecular meshwork pigmentation and there is no ITC, क्योंकि जब स्क्लेरल्स पर नजर नहीं आएगा तो उस वक्त ITC होगा। एंड देन यू क्लासिफाई कि कितना ITC है, you अपनी मेंटल पिक्चर बनाए, क्योंकि इस जगह ITC है, इधर नहीं है, इधर है, तो आप उसकी मेंटल पिक्चर बनाए कि accumulated टोटल कितना है। इफ टोटल इज मोर देन 2 quadrants तो ऑफिशियली WGS क्लासिफिकेशन के लिहाज से दैट्स एन includable angle। हो गया मैम। नहीं कुछ भी नहीं है सर, इनको चलने दें अभी। ये दिस इज अ क्वेश्चन आई वांटेड समवन टू आस्क कि गोनियोस्कोपी के फॉलो अप कितना है। अगर आपके पास एक जवान आदमी आता है विद ओपन एंगल, लेट्स से 40-45 एज का है, आपने उसको ओपन एंगल किया गोनियोस्कोपी के बाद, ही जब तक उसका कैटरैक्ट बड़ा नहीं होता, his angle is not likely to change because phacomorphic elements with age will come in and angles will get, so he may not need a repeat gonioscopy in even 10 years. लेकिन अगर आपके पास 65-year-old person आता है जिसका ऑलरेडी ग्रेड 3 है और वो फेकेक है, तो उसको अगर आपको चाहिए कि हर 2-3 साल के बाद रिपीट कर लें, क्योंकि उसका तो लेंस बड़ा हो रहा है, एंड ही इज ऑलरेडी ग्रेड 3 एंड ही इज गोना हिट ग्रेड 2 वेरी सून। ये लो मैग्ना व्यू ले लिया। तो इट ऑल और जो So we have another ऑलरेडी volunteer, Dr. Safdar Ali from Faisalabad. एग्जैक्टली, क्योंकि लेजर जो है, यही मैंने अगले लेक्चर में अपना करना कि लेजर तो सिर्फ रिलेटिव पिपली ब्लॉक को सही करेगी, नैरो एंगल तो इज ड्यू टू मेनी अदर रीजंस। अगर उसका मेन रीजन वाज नॉट रिलेटिव पिपली ब्लॉक तो आपकी लेजर वुड नॉट वर्क। Yes. So this is the third patient. Yes. नजर आ रहा है मैंने? Yes. ठीक है सर, ठीक है। नहीं, Other mechanism. Is it? Yeah. दोबारा दिखाइए प्लीज। So we have the third patient here. ये आयरिस नजर आ रहा है, ये वेरी नाइसली इंडेंट कीजिए प्लीज। No, this is not the अच्छा, so you can see this is a triple mirror, so angle is far more clear and easier to see. ये एक जगह स्टेबल कीजिए। अब ये देखें हेवीली पिगमेंटेड है, लेकिन जो जितना मर्जी पिगमेंटेशन हो, आई डोंट नो वेदर यू कुड रियलाइज और नॉट। रोशनी डालिए, ये स्क्लेरल्स पर तो नजर आया ना आपको, अगर स्क्लेरल्स पर नजर आ गया तो उसके नीचे भी आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज नॉट रियली, यू लुकिंग एट ग्रेड 4, ठीक है। गो फॉर स्क्लेरल्स पर, जैसे चील कपड़े पड़ते हैं ना चूचे को, गो फॉर स्क्लेरल्स पर एंड देन यू विल क्विकली रियलाइज कि कई दफ़ा पेशेंट्स नॉन कोऑपरेटिव भी होते हैं। तो एंगल इज डेफिनेटली ओपन, posterior trabecular meshwork pigmentation seems to be mild to moderate.
In and the the iris direction of the profile lens. is slightly anterior convexity, जिसे कहते हैं bow forward. So this is D with about 30-degree B, small b, +1, +2 pigmentation. जी. ये ग्रेड 4 है जी, सिंपल. शेफर्स का ये सबसे मजा है, आपने 4 लिखना है अरब में, लाइक दिस. ये देखें स्क्लेरल स्पर नजर आया आपको? चलें ठीक है सर. और मेरे बेटे की शादी सब में नहीं आ रहा. तो अगले में कर लेंगे सर. So but you can clearly see the scleral spur जब भी रोशनी पड़ती है. The most clear thing is that glistening white band. जी. Can you see the angle now, Dr. Rashid? Can you explain the angle? So ऊपर देखें. so वो फिर उधर डिस्प्ले कम हो जाता है, इसकी लाइट कम करते हैं. so मुझे बार झलक नजर आती है. अब you can clearly see scleral spur, you can see some ciliary body, mild to moderate. So this angle is grade 4. It doesn't seem to be occludable with slight anterior convexity of the iris. तो आप इसको जैसे अल्फाज में लिख लें, स्पेथ क्लासिफिकेशन में लिख लें, शेफर्स लिख के उसके आगे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें. लेफ्ट थोड़ी सी बोइंग है Right side. राशिद जी बोइंग है सर. Boeing है That's तो- why it's B. हाँ. Boeing is normal. Boeing is very normal. लेकिन ये बोइंग so you can हैवी see how clearly you can see. हाँ. अब अगर आपको स्क्लेरल स्पर 3 मिरर पर नजर नहीं आता, you have to use 4 mirror or any other indentation lens. क्यों? हाँ जी, फिर उसका मतलब साइनिकल क्लोजर हो सकता है ना. कई दफा होता है साइनिकल क्लोजर भी नहीं होता, लेकिन पीछे से प्रेशर लेंस का इतना ज्यादा होता है कि यू कांट रियली इंडेंट. वो भी आपको पेशेंट्स मिलेंगे कि विदाउट साइनिकल क्लोजर भी आप इंडेंट भी करें तो एंगल नहीं ओपन होता. इंडेंटेशन भी किया तो नजर नहीं आया, तो बस आप डॉक्यूमेंट कर देना कि भाई प्राइमरी पोजीशन पे भी नजर नहीं आया. इंडेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट इंडेंट, जस्ट बी ऑनेस्ट. राशिद बोइंग जो है स्लाइड मोर दिस इज पिगमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. जब आप इंडेंटेशन पे भी इंडेंट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स इट्स रियली समथिंग इज गोइंग ऑन, इज पुशिंग फॉरवर्ड, जो कि आप इतनी एक्सटर्नल फोर्स से भी नहीं पीछे प्रेस कर सकते. लेकिन आप मेंशन कर दें कि आई डोंट बिलीव कि यहाँ पे साइनिकल क्लोजर है. इट सीम्स टू बी ITC, एपोजिशनल इरिडोट्राबेकुलर कॉन्टैक्ट है, नॉट साइनिकल इरिडोट्राबेकुलर कॉन्टैक्ट, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंडेंट. आई कांट डॉक्यूमेंट द एंगल मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर. तो ये इतनी इंफॉर्मेशन जब आप किसी भी सर्जन को देंगे, ग्लूकोमा सर्जन को, उसको पता है कि भाई यहाँ पे मसला है, मैंने क्या करना है, मैंने जाना है कैटरेक्ट सर्जरी करनी है इसकी. ये जो बोइंग है ये ज्यादा हैवी पिगमेंटेशन से भी तो होती है ना, अगर बहुत ज्यादा हैवी पिगमेंटेशन है. हाँ. नहीं वो एंटीरियर बोइंग जो है, एंटीरियर बोइंग के पिगमेंटेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं, मास वाई के एवरी नाउ एंड देन इफ इट्स टू हाई इट कैन टच ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑन डायलेटेशन, एंड ट्रेबिकुलर मेशवर्क पे आपको पैचेस नजर आ सकते हैं. जो आपको पैचेस नजर आएंगे ट्रेबिकुलर मेशवर्क में, वैसे गोनियोस्कोपी करें तो इस ग्रेन ओपन, लेकिन आपको ऐसे ग्रैन्युलर नजर आ रहे हैं जो कि सूडो एक्सफोलिएशन के भी नहीं है, जो कि किसी और पिगमेंटरी ग्लूकोमा के भी नहीं है. दैट शुड गिव यू अ क्लू कि व्हेन प्यूपल डायलेट्स इट गोज एंड टचेस द ट्रेबिकुलर मेशवर्क. सो देयर इज एन इंटरमिटेंट ITC. We would like to thank Jasani Scientifics for their technical support. So thank Please you very इनके a round of applause for Jasani. तो मेरा एक हमेशा से एम रहा है कि you always support people who teach. तो जो लोग ये जो इंडस्ट्री से हैं, if they are helping you to teach, उनको लाजमी सपोर्ट किया करें. Thank you very much. थैंक यू. Okay, this is the end of our instructional course. I would like to call on the stage all the presenters for a group photo.
प्रेजेंटेशन थी, ये मुझे पीपीटी जो ना यूएसबी में चाहिए थी। जो भी हुई है हाँ ये सर बार जो है ना आप जाएंगे उनको कहिएगा हॉल-3 में जो भी हुई है ना 12 बजे की डॉक्टर राशिद ज़िया की, वो हमको वहाँ से कॉपी कर दें। ठीक है ना, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन कॉपी करवा रहे हैं।